दोस्तों गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का 8 अप्रैल का जो न्यूज़ लेटर है, तो ये लीगल न्यूज़ लेटर में जो फर्स्ट न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्नॉलेज किया है कि जहाँ पे कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होता है एंड बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म कोई एनवायरनमेंट में कंसिक्वेंस हो रहा है, तो उधर पे इस मैटर में उस प्रोजेक्ट को अल्टर करना पड़ेगा। और ये बेसिकली एक्नॉलेजमेंट किया है सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर केस जहाँ पे बेसिकली देयर वाज दिस पर्टिकुलर सोलर पैनल पावर सिस्टम, और ये बेसिकली दिस यूज टू रन थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे बेसिकली हम लोग का एक इंडिया में एंडेंजर स्पीसीज है जिसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोला जाता है। एंड दैट पर्टिकुलर बस्टर्ड, those particular birds used to get stuck in the high tension line and there was a lot of fatalities in this regard। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट करते हुए ये एक्नॉलेजमेंट किया है। नाउ कमिंग टू द सेकंड न्यूज, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट व्हेन देयर इज एनी काइंड ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन दैट कैन नॉट बी कम अंडर द एम्बिट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने कोई भी बिजनेस में बेसिकली कुछ सप्लाई किया एंड देन बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर सप्लाई आई वाज टू गेट सम मनी, or that will be considered as a commercial transaction, not as a like a consumer protection। So very similarly there was this particular example here जहाँ पे somebody actually made some investment and from that particular investment they were getting some kind of interest according a benefit। So in this particular commercial transaction it cannot be considered that they come under the ambit of the Consumer Protection Act। Now coming to the third news, सुप्रीम कोर्ट ने एक्नोलेज किया है जहाँ पे कोई भी पार्टनरशिप फर्म में इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डेथ ऑफ अ लीगल हेयर, तो जब वो डेथ हो जाता है तो उसका लायबिलिटी बेसिकली ओन बी कमिंग ऑन टू द एस्टेट ऑफ द लीगल हेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीज्ड पार्टनर। तो ये पर्टिकुलर जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इफ देर इज काइंड ऑफ ऑनरस और एनी काइंड ऑफ लायबिलिटीज देयर ऑन द फार्म, दैट पर्टिकुलर फार्म्स पार्टनर्स लायबिलिटी ओन बी upon the legal heirs, but it will be the liability will be upon the farm only। So coming to the fourth news of today, Supreme Court has said that this is also a very important news, that when there is a alteration in the share capital of the company, there won't be any further stamp duty। It means let's say एक company है जहाँ पे let's say two of the particular partners or let's say promoter they have like a let's say 60-40 stake। अब ये जो 60-40 जो स्टेक है इसको समझिए कुछ ऑल्टर किया गया तो वन पार्टनर गेट्स 80% ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी स्टेक एंड अदर पर्सन इज 20। सो दिस ऑल्टरेशन सुप्रीम कोर्ट सेज इसमें स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगा बिकॉज दिस इज ओनली लाइक देयर इज नो पर्टिकुलर चेंज इन द इंस्ट्रूमेंट बिकॉज जो शेयर कैपिटल है दैट इज द फिक्स्ड। तो शेयर कैपिटल इंक्रीज नहीं हो रहा है बेसिकली, तो बेसिकली तो इंडिविजुअल का जो बेसिकली इंक्रीज होगा शेयर कैपिटल में। तो इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ ऑल्टरेशन इन दिस रिगार्ड, तो बेसिकली जो सब्सिक्वेंट जो इंक्रीज है कि और डिक्रीज है जो शेयर कैपिटल में, तो इसमें बेसिकली फिर से स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगा। तो दोस्तों टुडेज बिकॉज ऑफ द टुडेज न्यूज़ लेटर दिस इज ऑल। तो आप लोग कुछ कमेंट में बोलिए कि आपको कैसा लगा। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड सब्सक्राइब टू माय न्यूज़ लेटर। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।